For the past couple of days, I've been having the worst time ever. I meditate, I feel like crying. I go out, I feel like crying. I walk, I feel like crying. I breathe, I feel like crying. Even though all of us have our phases wherein sometimes we feel good, sometimes we're not feeling so good, sometimes life feels like everything is aligning, yay, wow, everything is so beautiful. फिर अचानक से there comes a moment where it all seems to just collapse. सब रुक गया. And you feel like इतने महीनों से तुम किसी भी चीज पे जो काम कर रहे हो ना, वो अचानक से आके ऐसे धड़ाम करके गिर गया. अगर ये तुम्हारे साथ हो रहा है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, जो मैंने एक बहुत ही सिंपल सी बुक पढ़ी है. आई शो यू दैट बुक, विच इज दिस इज कॉल्ड द ऑब्स्टिकल इज द वे. The day that I started reading this book, I still haven't finished it yet. The day that I started reading this book, the day that I picked up this book was the reason. There's a reason behind it, because I genuinely felt like I have no idea why I do this, that I fall in love with the process of doing something, and then it just feels like it's not working out in the way that I want it to work out, and then I just give up on it. बेसिकली मेरे साथ क्या है कि मुझे कुछ अच्छा लगता है, मैं उसको कुछ दिन करती हूँ, एंड थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर होता है मैं तो तुरंत गिव अप कर देती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो पर्सनैलिटी नहीं है कि मुझे जब किसी से स्टिक करना है, व्हेन आई वांट टू स्टिक टू समथिंग, वन थिंग, आई डोंट नो व्हाट डीमन टेक्स ओवर. आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट एग्जैक्ट डीमन टेक्स ओवर माय बॉडी, दैट आई एम लाइक, इफ दिस डजंट वर्क आउट, आई विल डू दिस. People have plan A, plan B, I have plan Z. I genuinely have so many plans in my life that it's just become so difficult to commit to one single thing. I wanted to make this video raw, just me in my little t-shirt and pajamas, and just wanted to come here and commit to you. I want to commit to you the Araya's magic, क्योंकि हो गया मेरा इधर 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 100 जगह जाके हो गया मेरा फाइनल डिसीजन. एंड इट्स नॉट इवन अ डिसीजन, इट्स समथिंग दैट आई जस्ट वांट टू डू, इज टू स्टिक टू वन थिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज 1000 चीजें मुझे करनी है, मैं कर लूंगी, कोई इशू नहीं है, बट हाउ ब्यूटिफुल इट इज दैट यू हैव दैट वन थिंग एंड यू मेक दैट वन थिंग वर्क आउट. And I keep wanting new things. I keep wanting more. I keep wanting, okay, first I wanted something जिसके लिए मैं इतनी passionate हूँ कि मैं अंदर से मेरे आता है कि I come here and I make this video for you. Then next thing I want कि इतने number of subscribers हो, इतने number of views हो. Then the next thing will be money or something else. मेरी तो इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं हो रही ना. मैं तो भगवान जी से प्रे करती जा रही हूँ कि भगवान जी ये दे दो, भगवान जी वो दे दो, पर नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना उससे कुछ. इससे बेटर जो मैं कर रही हूँ, जिसके लिए मैं इतना पैशनेट फील कर रही हूँ, लेट मी जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ दैट पैशन, फॉर द सेक ऑफ दैट फीलिंग दैट आई गेट वेन एवर आई अपलोड अ वीडियो, फॉर द सेक ऑफ दैट फीलिंग दैट आई गेट वेन एवर आई क्रिएट अ वीडियो. इफ यू हैव समथिंग इन योर लाइफ which you do, just do it for the sake of doing it. We have all entered this zone कि हमको लगता है कि this is a hobby, I'm so passionate about it, I need to make money from it. No, you don't. If you have something that you love, do it just because you love it. You don't need to make money, you don't need to have fame from every single thing that you love doing. I want to do it because I want to do it. If you have anything in your life which you always loved, but somehow you just don't do it anymore because you're like career and life and this, I do not care. Do it because it fulfills your heart. Do it because you love it so much. Do it because of how many endorphins and beautiful hormones and happiness it releases inside of you, how it makes your heart feel. Do it because of that, because that's what I'm gonna do. I'm gonna
upload this video raw, unedited, however it is. I don't care if somebody watches it, doesn't watch it. I don't care. I'm doing it for myself. I'm doing it because I want to do it. I'm doing it because I feel like it's art. For people, how drawing is an art. For people, how editing something, creating something cinematic is an art. For me, speaking is an art. For me, being able to sit down here and talk to you and explain to you something, and then you're like, yeah, it just clicked in my brain. That's what art is for me. That's what art feels like in my body, and that's exactly what I want to do. I was a model in the past and I loved modeling. I loved modeling. I enjoyed every bit of it. But there came a part, and I started doing it because I was passionate about it. Then there came this part wherein I just started running for money, and I was like, oh, but they're paying me this. I want this much. I want this much. And then this, and then I did not want to do it anymore. From this moment on, what I've understood is, even if I love something and I don't earn from it, even if I love something and it's not working out for me in that one particular direction, I do not give 2Fs. I do not care. Do you know why? Because I want to do it, because I just want to do it. अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को लेके लाइफ में थोड़ा सा भी पैशन है एंड तुम्हें लगता है कि अरे यार मेरे को इतना अच्छा लगता था बचपन में कि आई यूज्ड टू डांस, इट यूज्ड टू जस्ट फुलफिल माय हार्ट, इट यूज्ड टू मेक मी फील सो गुड, बस उस फीलिंग के लिए कर लो. I know people who used to enjoy cricket. I know people who used to enjoy just painting. I know people who used to enjoy singing. There are different kinds of people everywhere in life. Even I used to enjoy singing so much when I was younger. पता नहीं सब कहाँ चला गया यार. अगर तुमको उसको करियर नहीं बनाना तो अपने दिल की खुशी के लिए कर लो ना. मैं भी आज से ही दिल की खुशी के लिए करूँगी. जो तुम्हें तुम्हारी दिल की खुशी के लिए करना है ना, तुम वो करो. तुमको जो करना है ना, तुम वो करो. भाड़ में गई जनता, भाड़ में गए लोग, किसको क्या पड़ी है यार. 10 साल बाद कोई किसी को फर्क भी नहीं पड़ना कि तुम उन 2 घंटे में क्या कर रहे थे. तुमको खुद को याद नहीं रहेगा. I was opening this packet today which had like all the cards that I made or people made for me, and I always used to collect these, and I always kept them hidden with me in my drawer, and I just found them today and I was going through them. I did not even remember that person had given me that card. I did not even remember that I had made that card for that person, for my parents, for my family or whoever. I do not even remember. तुम्हें कुछ याद नहीं रहने वाला 10 साल बाद. कुछ भी, किसी को कुछ याद नहीं रहता. There are very specific moments जो हमको याद रहते हैं. ये डे टू डे डेली वाले रूटीन किसी को याद नहीं रहते. जो 4 घंटे बैठ के तुम स्क्रॉल करते हो ना, तुम्हें घंटा याद नहीं रहेगा. You will only remember this as negative memory. तो जो करना चाहते हो ना, जिससे दिल को खुशी मिलती है, एटलीस्ट वही कर लो यार. दिन भर बैठ के स्क्रॉल करने से बेटर दिन भर बैठ के कह रहे माई लाइफ इज सो सैड, माई लाइफ लाइक, भाड़ में जाने दो इन सब चीजों को. डू वॉट यू लाइक, डू वॉट यू वॉन्ट टू डू. जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. जस्ट डू इट बिकॉज यू लव डूइंग इट. And I just wanted to say it. I wanted to come here, be a little aggressive and just say this, but I love myself. I genuinely love myself, and I want to give myself every single beautiful thing in the world. I want to give myself beautiful experiences. But I also don't want to attach myself to things, and that's why I've always been so detached from everything कि ये नहीं चल रहा है, मैं कुछ और करने लग जाऊंगी. इससे नहीं हो रहा है, मैं कुछ और करने लग जाऊंगी. एंड इट्स ब्यूटीफुल इन अ वे, बट तुम ये कब तक करोगे ना. सो आई एम जस्ट गोना डू दिस बिकॉज आई लव डूइंग इट. एंड लेट मी मेक दिस माई प्लान ए. You, dear YouTube, you're my plan A. And my babies who watch me, they'll have their plan A when they are done watching this video. Have your plan A, go after it, do it. And if you don't want to have any plans, you want to do it just because you love it, then let go of this plan A, let go of plan B's, let go of all plan Z's, every